Okay, so hello everyone. We are back again with a very new topic, and that is so previous lecture में हम लोगों ने male and female reproductive system के topics को target किया था for the need purpose. So today we are going to target your reproduction in case of your flowering plant. So we are going to deal with that part. All right. So let us just start with our lesson now. So let me again give you a brief description of what we are and what is our purpose. So basically हम Perceiv3D live classes हैं and 3D models के through जो चीज़ों को कर सकते हैं and whatever the conceptual things that we study of particularly your biology, it is primarily through your 3D models. All right. So यहाँ पे दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो होती हैं कि हमारा मॉडल्स के थ्रू जब हम किसी भी चीजों को परसीव करते हैं या लर्न करने की कोशिश करते हैं, सो दैट बिकम्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट बिकॉज इट इज गोइंग टू मिनिमाइज योर कॉग्निटिव लोड. दैट मीन्स द लोड विच इज गोइंग टू बी ऑन योर ब्रेन और माइंड फॉर बहुत ज्यादा लोड वो नहीं प्रेशराइज करता, क्योंकि हमें बायोलॉजी के साथ साथ वी नो दैट वी हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. सो मॉडल से एक तो ये फायदा होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाती है वो ये दैट इट इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द कॉन्सेप्ट्स, इट हेल्प्स इन द रिटेंशन ऑल्सो. और ये जब चीज हम बार बार करते हैं, दैट मीन्स मॉडल्स के थ्रू जब हम चीजों को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, सो दिस हेल्प्स इन learning the concepts of biology in a very, very easy and a convenient manner. So that is the purpose of this live classes that we are going to start, and we will be starting up very soon. Now, so basically इसमें हमारा again I'll just give you a brief idea that हमारे दो classes live classes basically can be in two ways. It is as such interactive, so that जो live class चलेगा on one hand will be conducted by the teacher, and on the other hand you can see कि ये student के लिए भी बहुत interface हो जाता है. So it's a kind of a 3D interface over here which the students can actually experience. So यहाँ पर teacher का चलेगा ऊपर की तरफ whatever the teacher is teaching, and the students on the other hand can also hand to hand, side by side वो चीजों को experience कर सकते हैं individually, all right, through the comfort of their home. So that is the main purpose. All right, again we can just, and apart from this you will be provided with notes. Then there is an auto reader mode over there, and all the notes can be in your pockets. This means कि labelings के through चीजें इतनी convenient हो जाती हैं. Like for example, any of the model which you are studying, whether it's since this is a heart model which you can see over here, तो यहाँ पे सबसे जो important चीज हो जाता है कि models के through आपको जो छोटे छोटे points हैं, key points हैं जिससे questions बन सकते हैं, through the questions can be actually framed. So all those things can be conducted in a very, very easy manner. So that is the importance of this these notes. That means the notes that will be provided by Perceiv. Then this is how the short notes and associated labels are also being given out. All right, so we are going to start up with a 75 days of crash course in the name of DISSECT NEET Biology, which you can see over here. All right, and this is for targeting the NEET 2022. All right, so we will be providing you a lot of services like class 11 and 12th का पूरा complete syllabus होगा. There will be daily live classes, notes will be provided to you, 3D interactive notes, physical notes and materials will also be provided. Along with that, the strategy and guidance and 20 plus mock papers will also be given to you for making your preparation a very strong and a core one. And these two courses will be done by two teachers basically. So one by me and Ankita, and the other ma'am is Sushmita Ma'am. So we both are going to handle
and make you people competent enough to to understand the concepts of biology in a very very easy way and in a very convenient way through these 3D models. All right, so hamara telegram ka link hai, all right, so which has been provided in the description box of your YouTube video, so you can join that link as well for further informations. And we are going to start up our registration for this for this NEET batch from 12th of April. So as early as possible, अगर आप register करते हैं अपने आप को, so using a code of PL300, you can avail more उतना से उतना ज़्यादा आपको discounts and all भी मिल जाएगा. So you can avail the notes in a very avail the classes and all the preparations. You can अपने preparations को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं through these ways. So register yourself as early as possible in order to avail all these facilities. All right, now let us start with our chapter now. So क्योंकि हम फ्लावर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो मॉडल हमारे दिमाग में आएगा वो फ्लावर का क्रॉस सेक्शन आएगा. So the cross section of the flower, which you can see over here. Let me just rotate this model a little bit. So you can see this is just a cross section. This is basically a longitudinal section of the flower. All right, and when we see the longitudinal section of the flower, हमें flower एक ऐसी चीज है जो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना. This is very convenient and इसके बारे में हम सभी जानते हैं. But here we are going to study flower in a little detailed manner. All right, so let me just first label all the different components and we will be seeing the components individually as well. So this is basically your sepal. All right, sepal of the flower. हमें मालूम है कि typical कोई भी जो flower होता है, it is primarily divided into 4 distinct parts. It is primarily divided into 4 distinct parts. Just a moment. Yeah, so this can be your sepal, then there is petal, then stamen, which is your male reproductive part, and 4th one becomes your carpel. All right, so sepal, petal, stamen and carpel, these are the 4 important parts of the flower. All right, so this is your sepal, then this becomes your petal, clear, then this is your carpel. So carpel is primarily divided into 3 distinct parts. इसको हम individually देखेंगे. Just a second. Yeah, I'll just label it again. This is your carpel, then this is your petal, and this becomes your sepal. So individual parts हम जब description पढ़ेंगे सबका, so we will be seeing the individual parts as well. All right, and this ultimately becomes your stamen, which is the male reproductive part. All right, now let me show you the individual components, है ना. एक बार individual components भी देख लेते हैं कि exactly इसका structure कैसे हमें दिखेगा. So if we can just isolate this part, which you can see, this one. So this is your sepal component, which you can see over here. Then these are your petals, which you can see over here. All right, this becomes your petal. Then this component becomes your carpel part. All right, and ultimately these structures, which you can see over here, the yellow structures part, which you can see over here, this becomes your stamen part. All right, so individually ये इस तरीके से दिखते हैं. Now, all right, so we have seen the flower cross section. Moving again. Now, flower में एक बहुत ही important structure होता है जो कि stamen के अंदर में present होता है. ठीक है, तो this is basically the, let me just tell you that what it is. ये है क्या?
So this is basically your microsporangium. This is the structure of microsporangium. Clear? ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है. अब माइक्रोस्पोरेंजियम होता कहाँ है? दिस माइक्रोस्पोरेंजियम इज फाउंड इन एंथर लोब्स, है ना. तो अब हम जिस पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दैट इज योर एंथर लोब. सो द लोकलाइजेशन इज इन एंथर लोब्स. तो एंथर लोब्स का जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें ये माइक्रोस्पोरेंजियम दिखता है. नाउ व्हेन यू लुक इनटू द वॉल लेयर्स ऑफ एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो वॉल लेयर्स होता है, इट इज प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू 4 वॉल लेयर्स. 1, 2, you can see over here, then 3, and then this one is your 4th layer. All right, so we can just label it. So the first layer of the microsporangium is basically your epidermis. All right, this is your second layer that represents your endothecium. Clear? Then this layer becomes your middle layers. ये middle layers हो जाएंगे. And of course, the innermost layer of microsporangium is your tapetum. ठीक है? तो ये wall layers हैं जो मैंने आपको बताया हुआ. These are all the wall layers. ठीक है? ये सारे के सारे वॉल लेयर्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के. ठीक. सो वी कैन जस्ट 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. नाउ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ भी रहा होगा दैट व्हाट इज एग्जैक्टली माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने आपको लोकलाइजेशन तो बता दिया कि एंथर लोब्स में होता है. ऑलराइट, नाउ ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये है क्या? नाउ दिस माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस यूजुअली रिप्रेजेंट्स योर पोलन सैक. ये ना फ्यूचर पोलन सैक को रिप्रेजेंट करता है. फ्यूचर पोलन सैक. ठीक है. तो ये फ्यूचर पोलन सैक, अब क्योंकि पोलन सैक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट दिस विल बी प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन्स. सो इट बेसिकली प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स. तो सबसे पहले तो ये माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा एंड दोज माइक्रोस्पोर्स विल बी कन्वर्टिंग इनटू अल्टीमेटली और मैच्योरिंग इनटू अल्टीमेटली योर पोलन ग्रेन्स. तो ऐसा रहता है. ठीक है. तो ये हमें दिखा. अब जो नोट करने वाली बात है इसमें ध्यान से देखिएगा, दैट इज वेरी वेरी एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. So the next important point to note in this part is that you can see कि ये जो पूरा structure है ना, ये यहाँ से ऐसे होते हुए this is going like this, है ना. तो अगर हम chambers की बात करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा chambers होता है यहाँ से लेकर के पूरा like this, if you are going to look like this. All right, so these are basically 4 lobes. 4 sporangium basically हमारा इस पूरे एंथर लोब में प्रेजेंट होता है. तो इससे हमें क्या पता चला? इफ यू कैन जस्ट लाइक रिमूव द बाइफर्केशंस, या तो इससे हमें ये पता चलता है कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट. और आई जस्ट सो इससे हमें बेसिकली ये पता चलेगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, इट इज यूजुअली इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन. ये यूजुअली tetrasporangiate condition में found out होता है. Now what do you mean by tetrasporangiate? Why tetrasporangiate? Because 4 chambers are found. All right, so this one is the first one, this one becomes your second, this becomes your third, and this one of course becomes your fourth. इसीलिए tetrasporangiate condition हम बोलते हैं. This is the importance. Clear? तो ये हमारा वॉल लेयर्स जो मैंने आपको बताया. नाउ एक चीज जो अगेन इंपॉर्टेंट है वो ये हो जाएगा कि
जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एक्चुअली में कहाँ माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, पहली बात तो फंक्शंस की बात कर लेते हैं, है ना. लेट अस जस्ट टॉक अबाउट द फंक्शंस फर्स्ट, कि इन वॉल लेयर्स का फंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो वॉल लेयर्स होते हैं, दैट मीन्स योर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर्स, ये जो 3 लेयर्स होते हैं, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर्स, ऑलराइट, इनका फंक्शन ये है दैट दे आर यूजुअली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. तो एक तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, यानी कि वो जो इनर लेयर्स हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के, यहाँ पर यू कैन यूज दिस वन, तो ये वाला जो अंदर का जो लेयर है ना, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है. सो प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, एंड अलोंग विद दैट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर dehiscence of anther to release pollen, है ना. तो बेसिकली dehiscence कराएंगे एंथर का, सो दैट पोलन ग्रेन्स कैन बी अल्टीमेटली रिलीज. तो ये फंक्शन किसका हो जाएगा, फर्स्ट 3 लेयर्स का, दैट मीन्स योर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर्स का. नाउ व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस टेप्टम 1, इसका क्या फंक्शन हो जाएगा. तो जो आपका 4th लेयर होता है, वी कैन जस्ट राइट ओवर हियर, है ना, ये जो 4th लेयर होगा, जो आपको टेप्टम दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है, क्योंकि इसका मेन काम होता है कि ना फूड रिजर्व से पूरा भरा रहता है. सो दैट्स व्हाई दिस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन्स. सो दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन्स. तो इसका जो फंक्शन होगा वो ये हो जाएगा. क्लियर. सो वी हैव सीन कि epidermis, endothecium, middle layers and tapetum are the wall layers of the microsporangium. Microsporangium क्या है, we have also seen that, and where it is being found, it is found in the anther lobes in a tetrasporangiate condition. ये हम लोगों ने देख लिया. All right, ये सारी चीजें देखी. Now let us just take a close look. All right, अब हम एक थोड़ा सा close look लेंगे. Just a moment. Let me just flip this model like this, and we're going to like this. So एक क्लोजर लुक अगर हम ले माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो हमें दिखता है कि टेप्टम के अंदर में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे रेड डॉट्स के फॉर्म में. नाउ दीज रेड डॉट्स आर व्हाट, ऑलराइट, और वो है क्या. ठीक है, सो द internal structure which you can see over here inside tapetum, ये हमारा तो टेप्टम हो गया, है ना, ये हमारा हो गया टेप्टम. ठीक है, जिसका मेन काम है कि वो पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. नाउ दिस बिकम्स योर स्पोरोजेनस टिश्यू. टेप्टम के अंदर में एक टिश्यू फाउंड आउट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू. नाउ व्हाई स्पोरोजेनस टिश्यू इज इंपॉर्टेंट. स्पोरोजेनस टिश्यू हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and this has been asked in a NEET exam a couple of times. All right, now this sporogenous tissue, this undergoes the process of differentiation. इसमें ना differentiation होता है. Now what do you mean by differentiation? Differentiation का मतलब कि ये mature करेगा. ठीक है, it is going to mature itself. All right, so जब इसका differentiation होगा, so it develops into a new kind of a cell which is called as pollen mother cell. So this ultimately develops into pollen mother cell, which is shortly termed as PMC, like this. Clear? तो मतलब होता स्पोरोजेनस टिश्यू है, उसका जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो पोलन मदर सेल बनाएगा. क्लियर. नाउ पोलन मदर सेल जब बनाएगा तो ये जो पोलन मदर सेल होता है, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये जो होगा दिस इज यूजुअली ऑफ डिप्लॉयड नेचर. ये ना पहले से ही डिप्लॉयड होता है. और क्यों ये डिप्लॉयड नेचर आया, कहाँ से? ये डिप्लॉयड नेचर आया स्पोरोजेनस टिश्यू से. क्लियर. एंड
द रेड डॉट्स विच यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो आपको रेड डॉट्स दिख रहा है ये वाला, ठीक है, यही रिप्रेजेंट करता है पोलन मदर सेल को. दिस इज द केस. ठीक है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि पोलन मदर सेल तो बन गया, पोलन ग्रेन्स कहाँ से आया अल्टीमेटली? तो जो पोलन ग्रेन्स आता है वो आता है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर, यही पोलन मदर सेल से हम यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करने वाले हैं. सो ये जो पोलन मदर सेल जो हमारा यहाँ पे बन जाएगा ना, विच इज डिप्लॉयड, अब ये पोलन मदर सेल में एक डिवीजन होगा जिसको हम बोलते हैं मियोसिस, which is a kind of, which everybody knows that this is a kind of what? This is a kind of reduction division. And if this is a kind of reduction division, then definitely ये आपका जो spores बनाएगा that will be haploid. तो जब इसमें reduction division होता है तो ये 4 microspores को बनाते हैं. ठीक है. इनफैक्ट ये जो माइक्रोस्पोर्स होंगे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में होते हैं. Just a second. This is usually present in as microspore tetrad. Microspore tetrad. अब माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में कैसे बनेगा? मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो कुछ ऐसा रहता है, ये कुछ ऐसा रहता है. ठीक है, लाइक दिस. दिस इज योर माइक्रोस्पोर टेट्राड. ठीक है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन फिर अगेन आ सकता है दैट मैम व्हाई दिस, अगर पोलन मदर सेल एक है तो फिर उससे 4 माइक्रोस्पोर्स कैसे बन गए? अगर डिवाइड किया है कोई सेल तो डेफिनेटली उससे तो 2 सेल्स बनने चाहिए थे. So this meiosis that has taken place over here, meiosis से ultimately हमारा 2 सेल बनता है. This meiosis is again followed by 1 mitotic division over here, and तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं meiosis and 1 mitosis division. तो एक meiosis होगा और एक mitosis होता है, तब हमारे 4 microspores ultimately बनते हैं. And why microspores? And always remember कि microspores हमेशा tetrad के फॉर्म में होंगे. They will always cluster themselves in a pair of 4, all right, or in a group of 4. In fact, I can say ये जो microspore tetrads होते हैं ये फिर ultimately जब mature होंगे, जब dehydrate हो जाते हैं, जब ultimately mature हो जाते हैं, तो they are ultimately released as pollen grains. Released as pollen grains. ये होती है इनकी फीचर. क्लियर? तो हमारा प्रोसेस फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ. सो वी हैव स्टार्टेड विद द स्पोरोजेनस टिश्यू. हमने देखा कि टेप्टम के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको हम स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं. स्पोरोजेनस टिश्यू का नेचर कैसा होता है? दैट इट इज ऑलरेडी डिप्लॉयड इन नेचर. तो इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये पोलन मदर सेल बनाएगा, पीएमसी जिसको हम बोलते हैं. क्लियर? पीएमसी को हमने यहाँ कंटिन्यू किया हुआ है. सो वी हैव कंटिन्यूड पीएमसी. पीएमसी यहाँ था हमारा तो हमने उसको यहाँ पे कंटिन्यू किया. तो दिस पीएमसी undergoes 1 meiosis followed by 1 mitotic division, will be forming 4 microspore जो कि टेट्राड के फॉर्म में होता है, मतलब 4 सेल्स में ऑलरेडी होगा. एंड अल्टीमेटली वो फिर पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में रिलीज होता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एक पोलन मदर सेल है तो उस एक पोलन मदर सेल से हमें 4 पोलन ग्रेन्स मिलेंगे. सो देयर वी विल बी हैविंग अ टोटल ऑफ 4 पोलन ग्रेन्स to be formed from the 1 pollen mother cell. So this is the case. And this entire process जो ये सारा process आपने पढ़ा ना, इसको पूरा का पूरा हम बोलते हैं एक new name से, which is called as Microsporogenesis. So this is known as your microsporogenesis.
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ऑलराइट, क्यों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? क्योंकि माइक्रोस्पोर बन रहा है एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. सो दिस एंटायर प्रोसेस दैट यू हैव स्टडीड ओवर हियर, तो उससे हमारा दो चीजें आ गया. हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी देख लिया एंड वी हैव आल्सो सीन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस. ऑलराइट, तो ये clear? This is the case. Now we will move again with the next part. Like this. Okay, so let me just first tell you about this one. All right, तो ये बेसिकली कुछ फ्यू पॉइंट्स हम क्लिक कर लेते हैं जल्दी जल्दी so that it becomes convenient for you to understand. All right, now one of the very important statement जो कि NCERT में दिया हुआ है वो ये that all the angiosperms or the flowering plants they perform the process of sexual reproduction. Now this has been asked as a statement in your NEET examination as well, that whether all the angiosperms or flowering plants perform sexual reproduction. So your answer should be yes. All right, तो ये ध्यान में रखना है. And we know कि जो sexual organ होता है किसी भी plant का, in fact flowering plant का, that is flower only. All right, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने diagrammatic section बनाया हुआ है which you can see over here. तो already हम लोगों ने इसके parts को देखा है. All right, so sepal, petal, stamen and carpel which you have already seen, है ना. फ्लावर को हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, दैट मींस दैट इट इज कॉल्ड एज अ कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट अराइजिंग फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द लीव्स कॉल्ड ब्रैक्ट्स. तो ओरिजिन जो होता है दैट कैन बी फ्रॉम द ब्रैक्ट्स इटसेल्फ. ऑलराइट, नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर of your, we will be starting up with the male reproductive, क्योंकि हमने पहले Microsporangium and anther and वो सारी चीजें पढ़ी, तो we will be talking about that part. All right, so इसमें pre-fertilization events के structures and events सबको include किए गए. Now flowers बनते कैसे हैं, हम आपके दिमाग में question आ जाएगा that flowers are, how flowers are actually formed. So it is because of two changes. All right, यहाँ पे दो changes होता है, बहुत ही important changes. एक तो स्ट्रक्चरल चेंज होगा और दूसरा फिजियोलॉजिकल चेंज होगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल चेंज? स्ट्रक्चरल चेंज जो होगा वो हो जाएगा शूट एपेक्स पर. सो दिस बेसिकली हैपेंस एट शूट एपेक्स. क्लियर? तो और फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब व्हाट? फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है हार्मोनल चेंजेस, मतलब जो जितने हार्मोन्स होते हैं प्लांट के, जैसे जो हम पढ़ते हैं ऑक्सिन, देन देयर इज जिब्रेलिन, then there is cytokinin. So these are the hormones that promotes flowering. तो ये सब hormones होगा, उनका induction होगा, and और वो भी shoot apical meristem में जो मैंने आपको अभी बताया, and then only the flower is going to be formed. First it will get transformed into an inflorescence and then ultimately it will form the flower. Clear? तो ये चीज होती है. Now we can just move back to the structure of your microsporangium. Just a second. I'll just let me just tell you about this part here, then we will move on with the microsporangium part, है ना. देखिए, तो हम क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं एक इंडिविजुअली ड्रॉ करूंगी so that you people can have an idea like this. तो अगर मैं इंडिविजुअली ड्रॉ करूं the stamen part like this, so this goes like this. All right, now basically a stamen, this is a stem, all right, which is the male reproductive organ. So a stamen consists of two parts जिसको हम बोलेंगे anther lobes, all right, और क्योंकि आपको दिख रहा है that there are two lobes, so that's why the anther lobes is usually bilobed, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है that this is usually your bilobe, all right, and apart from this it has a filament.
it has a filament. So anther lobes and filament. All right. You will be very very surprised to know कि हर लोब में ना 2 चैम्बर होते हैं ऐसे. हर लोब में आपको 2 चैम्बर दिखेगा इस तरीके का. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलेंगे थीका. ठीक है, so since each lobe is having 2 theca, so that's why it is called as your dithecous over here. Remember, bilobe क्यों बोला, क्योंकि 2 लोब है. Dithecous क्यों बोला, क्योंकि हर लोब में there are 2 theca that is being found. Theca means chamber, and this chamber is ultimately going to develop into microsporangium. वो microsporangium में develop करेगा. ये जो है ना, this is going to ultimately develop into microsporangium. Like this. Clear? Now, basically, filament जो है, it's a kind of a long, slender, stalk-like structure which you can see, जो कि anther lobes को hold करके रखता है ना. अब inside this microsporangium क्या होता है, अगर मैं बोलूँ तो inside this microsporangium हमें मालूम है कि अभी हम लोगों ने पूरा वो डिस्कशन किया कि उसमें pollen grains found होगा. ठीक है, so this is the case. Now, filament जो है, इसके 2 ends होते हैं. This is very important again. Filaments के 2 end हो जाएंगे. One is called as your distal end and the other is called as your proximal end. तो ये जो पहला वाला end आपको दिखता है, यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया हुआ है, this becomes your distal end. ये distal end है. ठीक है, that means the end which is attached to your anther lobes. This has also been asked in your NEET examination. ये पूछा है. So this becomes your distal end and this becomes your proximal end. तो proximal end जो होता है वो attached होता है receptacle या thalamus से. That has been written over here. Clear? ये हो जाएगा. अब हम लोगों ने structure में already देख लिया है. मैंने आपको बताया था कि 4 microsporangia होगा. So definitely this is a tetrasporangiate condition which I have already explained you in the model itself. Tetrasporangiate condition क्योंकि 4 microsporangium होगा. And each lobe is separated by 2 theca. Yes, definitely. And the theca is separated by longitudinal grooves. So there's a longitudinal tissue that separates the 2 lobes. Now, microsporangia represents the future pollen sac, and which ultimately is going to bear the what? Pollen grains. So this we have seen all this in the description section. All right. Now, we can now move to your microsporangium part. Yeah, just a second. Yeah, see. So we have already seen कि हमारा जो microsporangium है वो basically 4 layers में divided है. We have seen that. मैंने सारी चीजें, सारे explanations आपको already बता दिया है. All right. So this becomes, ये जो part हो जाएगा, it is usually circular in section. तो इसमें आपका हो जाएगा, this is your epidermis, endothecium and middle layers. तो function मैंने आपको already बता दिया था. That the function is protection and dehiscence of anther to release the pollen grains. All right. Now what about the tapetum? Tapetum, in case of tapetum, these are usually a bi or multinucleated, having the dense cytoplasm. So this will be the case. Now ये जो tapetum होते हैं, ये आपका nourishment provide करते हैं to the developing pollen grains. ये हम लोगों ने already देखा हुआ. ये सारी चीजें मैंने आपको already बता दी थी. फिर हम लोगों ने microsporogenesis के बारे में देखा, in which the microspores are formed from the pollen mother cells as a result of meiosis, है ना? Sporogenous tissue का sequence and all those things मैंने आपको already explain किया हुआ था. यहाँ पे वही सारी चीजें मैंने explanation के form में mention की हुई हैं. All right. So this PMC that has been given, this PMC is going to give rise to ultimately your microspore tetrad, है ना? And that will ultimately develop into your pollen grains. So this is the process of your microsporangium, flower, and all those things that we have seen. Now let us just move ahead
with the next part and pollen grain का cross section पे आते हैं. So you can see on your screen the cross section of the pollen grain being represented, है ना? ये रहा, तो कुछ ऐसा हम बता सकते हैं. So basically the cross section of pollen grain is also again very unique, you can say, because जो सबसे पहला तो वॉल लेयर बता देती हूँ मैं आपको कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स ना मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं. So these pollen grains basically represents your male gametophyte. So this usually represents your male gametophyte. Clear? Now, अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनका वॉल ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. So this you can see is called as the exine of the wall layer, and this is considered to be as the intine layer. All right. So दो wall layers होते हैं, exine and intine. This exine is unique in the sense क्योंकि ये बना होता है sporopollenin का. So this is usually made of sporopollenin, जो कि one of the hardest and resistant materials known है. So this is the hardest materials known, जो कि समझ लीजिए कि किसी भी chemical, किसी भी enzyme, no enzymes, acids or alkalis have been discovered that can actually degrade this sporopollenin. All right. So hardest material known, you can say. This is the hardest material known. All right. Intine, on other hand, is made of cellulose and pectin. ये cellulose and pectin का बना होता है, ठीक है? And because of this sporopollenin, you will be very surprised to know that because of this sporopollenin, pollen grains are usually preserved in the form of fossils. Pollens are preserved as fossils. Why? क्योंकि sporopollenin को कोई degrade करने वाला material known ही नहीं है, तो इनको हम fossils के form में preserve करके रख सकते हैं, so that in case in the future any research purpose or scientific purpose is required, तो हम pollen grains को use कर सकते हैं या extract कर सकते हैं for hybridization experiment or for crop breeding improvement programs or any of the things. So preserved as fossils. Clear? This is the important part. All right. Now circular section आपको दिख रहा है. Size इनकी बहुत small होती है, which is usually 25 to 50 micrometer in diameter. तो इनका जो size जो होता है वो बहुत ही कम होता है. All right. Now let us just move on to the like this. We can see this part. तो हम लोगों ने wall layers देख लिया. Now let us just look into the internal structure. So cell की जब हम बात करते हैं, so this is pollen grain at 2 cell stage. ये जो है आपको जो section दिख रहा है, this is usually your pollen at 2 cell stage. Clear? ये 2 cell stage वाला pollen grain है. Now pollen grain at 2 cell stage means what? One is called as your vegetative cell. यहाँ पे मैं label कर देती हूँ. So this becomes your vegetative cell, which is a bigger cell. You can see, दिख रहा होगा कि size में काफी बड़ा है, और क्योंकि बड़ा है तो इसका main function यही है कि ये food reserve का काम करेगा, है ना? You can see the entire space over here. और ये जो structure आपको दिख रहा है, this is your vegetative nucleus. ये vegetative cell का vegetative nucleus है. This is your vegetative nucleus over here. ठीक है? और ये जो structures आपको दिख रहे हैं, this is basically a vacuole, but इसको हम बाद में label करेंगे. This cell, क्योंकि cell की बात कर रहे हैं, तो we will talk about that. This is your generative cell. तो जो 2 सेल मैंने आपको बताया, तो वो हो जाएगा एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा हो जाएगा जेनरेटिव सेल. सो वेजिटेटिव सेल इज मेंट फॉर फूड रिजर्व, और वो पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा.
जो जेनरेटिव सेल होता है ना, जेनरेटिव सेल से का फंक्शन ये होता है कि ये आपको जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज योर जेनरेटिव न्यूक्लियस। जिस तरीके से वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, उसी तरीके से जेनरेटिव सेल का भी न्यूक्लियस है। सो द न्यूक्लियस ऑफ जेनरेटिव सेल दैट इज गोइंग टू डिवाइड माइटोटिकली। ये क्या करता है? इट डिवाइड्स माइटोटिकली। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अल्टीमेटली डिवाइड करता है एंड दैट टू माइटोटिक डिवीजन होगा और प्रोड्यूस करेगा 2 मेल गैमेट्स को। जस्ट अ सेकंड। बेसिकली प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट्स, और यही मेल गैमेट्स जो होंगे वो पोलन ट्यूब में रिलीज हो जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द फंक्शन। सो द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल कि ये फूड रिजर्व का काम कर दिया, और जो जेनरेटिव सेल का फंक्शन हो जाएगा कि ये 2 मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, और ये जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं दिस इज passed on to where? This is ultimately passed on to pollen tube. ठीक है, और ये पोलन ट्यूब इमर्ज कहां से होगा? ये पोलन ट्यूब इमर्ज होता है जर्म पोर से। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी शो यू द जर्म पोर। सो दिस इज अबाउट द सेल्स। तो हमने वॉल लेयर्स देखा, हमने सेल्स देखा। अब मैं आपको थोड़ा जर्म पोर के बारे में बता देती हूँ कि जर्म पोर्स कहाँ फाउंड होता है। तो इसके लिए फ्लिप करना पड़ेगा मॉडल को, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, सो बेसिकली ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो गैप वाले पार्ट दिख रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे, ये जो गैप वाले पार्ट दिख रहे हैं ये ही अल्टीमेटली जर्म पोर्स हैं। सो दीज आर योर जर्म। सो जर्म पोर्स, और आपको बहुत ही एक चीज जो आपको बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रही होगी वो ये हो जाएगी बेसिकली कि जर्म पोर में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, स्पोरोपोलेनिन इज नॉट देयर। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो ये हो जाएगी कि इन केस ऑफ जर्म पोर देयर इज एब्सेंट ऑफ स्पोरोपोलेनिन, देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। होता ही नहीं है, क्योंकि अगर स्पोरोपोलेनिन हो जाएगा ना तो ये जर्म पोर्स पोलन ट्यूब नहीं इमर्ज करेगा। तो इसका फंक्शन क्या होता है? टू इमर्ज आउट पोलन ट्यूब। The main function of germ pore is to give rise to pollen tube. तो अगर स्पोरोपोलेनिन होगा तो पोलन ट्यूब इमर्ज नहीं हो पाएगा, और इसी पोलन ट्यूब में अल्टीमेटली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जो मेल गैमेट्स होते हैं जेनरेटिव सेल के वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द germ pores one. ठीक, and this is about the cross section of the pollen grain that we have seen. Now we can just go ahead with this one. Now this one actually, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि पोलन ग्रेन्स जो हो जाएंगे मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। द साइजेस, स्फेरिकल साइजेस ऑब्वियसली माइक्रोमीटर होते हैं, बहुत ही माइन्यूट एंड स्मॉल होते हैं। वॉल इज 2 layers, एक्साइन होता है और इंटाइन होता है। एक्साइन इज आउटर लेयर, थिक एंड हार्ड, intine is inner layer and thin. This is made of sporopollenin and this is made of cellulose and pectin. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था। इसके बाद we can go to sporopollenin now. So this one. तो sporopollenin के बारे में बात करें तो it is one such layer that is one of the hardest, outermost hard covering होता है। Resistant organic materials known है and it can resist damage from the high temperature, acids, alkalis and other enzymes as well. And in fact, no enzyme can degrade the sporopollenin part. कोई ऐसा एंजाइम नहीं है and that's why they are preserved as fossils. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगेन मूविंग अहेड, जर्म पोर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया that giving rise to emergence of pollen tube जहाँ पे sporopollenin is absent. These are the key points to be noted. Remember. इनिशियली पोलन ग्रेन इज 1 cell stage, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन में मैंने आपको दिखाया था वो 2 cell stage था, है ना। हम लोगों ने जो अभी देखा तो उसमें वेजिटेटिव सेल आ गया, जेनरेटिव सेल आ गया। वेजिटेटिव ऑब्वियसली वाज लार्जर, जेनरेटिव वाज स्मॉलर, स्फेरिकल इन शेप है, स्पिंडल शेप्ड होता है डेफिनेटली।
मैंने फंक्शन आपको ऑलरेडी बता दिया कि abundant food reserve material, एंड इसमें जो फूड रिजर्व होता है वो यूजुअली नील हो जाएगा, दिस इज यूजुअली नील, एंड इसका जो मेन फंक्शन है वो ये हो जाएगा टू प्रोड्यूस, टू डिवाइड माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस द टू मेल गैमेट्स। ऑलराइट, तो ये इनका फंक्शन है। Now, what do you mean by shedding of pollen grain? अब हम थोड़ा सा little information about other informations about pollen grains के बारे में जानेंगे, that what is exactly the shedding of pollen grains that we come across. All right, now shedding of pollen grains basically means that कि pollen grains का release कब होगा. Shedding basically means release of pollen grains. This is called release of pollens. Clear? This is the case. Now you will be very surprised to know that more than 60% of angiosperms में the shedding takes place at 2 cell stage, and the remaining species of angiosperms में the shedding takes place at 3 cell stage. Now 3 cell stage means what? One vegetative cell and the other generative cell is going to divide and give rise to 2 male gametes. So ये 3 cell हो जाएंगे, मतलब एक vegetative और 2 male gametes. तो ये कहाँ से आए? Generative cell से आए. So this is called as a shedding. This information is very, very important because it has been asked in the form of questions. Now, pollen grains, pollen grains important इसलिए होते हैं क्योंकि pollen grains बहुत सारे, pollen grains का advantage भी होता है और disadvantage भी होता है. Advantage ये basically हो जाएगा कि ये allergic reactions cause करते हैं, which are usually your asthma, bronchitis. All right, and सबसे पहले the pollen allergy was reported by your Parthenium, which is also called as carrot grass, and it came into India as a contaminant with the imported wheat actually. उसके form में ये आया हुआ था. All right, and pollen grains are very much rich in, but advantage के form में जब हम देखेंगे तो these have been primarily used in the form of food supplements because they are very, very rich in vitamin B12, minerals and amino acids. All right, and athletes and race horses, they have been using the pollen grains to increase their performance. अपने performance को increase करने के लिए वो generally pollen grains को tablets के form में use करते हैं. Now the next is your viability of pollen grains. Now viability means the activity of the pollen grains to remain sexually active, you can say. मतलब release होने के बाद, है ना, रिलीज होने के बाद या शेडिंग होने के बाद वो कितने टाइम तक एक्टिव रह सकते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन करा लेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज योर वाइबिलिटी. तो उसका डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है. ऑलराइट, सो वो स्पीशीज टू स्पीशीज एक्चुअली वैरी करता है. सो इट इज अप टू फॉर 30 मिनट्स. इट इज इन राइस एंड व्हीट एंड इट इज फॉर फ्यू मंथ्स ऑल्सो इन रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी फैमिली, है ना. तो ये हो जाएगा. ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड. इसमें एक चीज जो मुझे बतानी है आपको, जो लास्ट पार्ट है वो हो जाएगा कि स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स. ऑलराइट, भैया, तो पोलन ग्रेन्स को यूजुअली स्टोर किया जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन एट अ टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस इन द फॉर्म ऑफ पोलन बैंक्स. व्हाई? क्यों स्टोरेज जरूरी है? क्योंकि वो क्रॉप ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में यूज किया जाता है. एंड स्टोरिंग ऑन ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं, this process is called as your cryopreservation. Remember, preserving any living tissue at -196 degrees Celsius or in liquid nitrogen, that is called as your cryopreservation. ठीक है, तो ये बहुत ही successful होता है. Now let us just start with the next model, and that is basically your ovule structure, which is again very, very important. Alright, तो ये आपको जो structure दिख रहा है, this is again the longitudinal section of your ovule. तो सबसे पहले हम जो अलग अलग parts हैं वो लेबल कर लेते हैं, and then we will see the individual parts. Alright, so ovule basically ये जो ovule है, this part. Alright, and then ultimately your this one. So this part which you can see, जो stalk like structure है, this is basically a funicle. Funicle जो होता है ना, वो ovule का stalk होता है.
ठीक है, अब ओव्यूल है क्या, पहले मैं ये आपको बता देती हूँ. लेट मी फर्स्ट गिव यू द डेफिनेशन. ऑलराइट, ओव्यूल एक तरीके से ना इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को बोलते हैं. सो दिस इज एन इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. ठीक है, ये होता है. एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तो हम लोगों ने देखा ही है. ऑलराइट, बट ओव्यूल इज यूजुअली फाउंड इनसाइड योर ओवरी, है ना. तो हमारा 3 पार्ट्स होता है कार्पेल का. ऑलराइट, स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ऑफ कोर्स योर ओवरी, है ना. तो ये जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा इज बेसिकली द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स. दिस इज योर लैंडिंग प्लेटफॉर्म. स्टाइल इज द लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन, मतलब ये एक elongated ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो पैसेज होगा मेल गैमेट्स वो ट्रांसफर करता है. एंड ओवरी इज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द लेसन ऑफ द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. ऑलराइट, तो दैट इज द केस. ओवरी के अंदर में आपका ओव्यूल होता है. ठीक है, ये हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देख रहे हैं. सो दिस इज योर फनिकल. फनिकल इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि ओव्यूल को ना प्लासेंटा से कनेक्ट करके रखता है. देन दिस इज योर हाइलम पार्ट. हाइलम इज गोइंग टू कनेक्ट दिस ओव्यूल विद दैट ऑफ द फनिकल, है ना. ये ओव्यूल को फनिकल से जोड़ेगा. सो दिस इज द केस. नाउ दिस इज द ओपनिंग. There are 2 points. One is called chalaja over here, and the other is called as micro. There are 2 ends, basically 2 poles, you can say. One is called chalaja, and the other are called as micropyle. So micropyle आपको दिख सकता है कि micropyle में covering जो है वो absent है. और ये covering क्या है? Covering is basically your integuments. और 2 हैं basically. Just a second. This is your integuments. ठीक है, so one outer and the other inner integuments. ठीक है, this becomes your nucellus. Nucellus जो है ये basically nutritive tissue है which is going to provide nutrition to embryo sac. So nutrition to your embryo sac which is your female gametophyte, है ना. और इंटेग्यूमेंट्स क्योंकि कवरिंग है तो ये बेसिकली ओव्यूल कवरिंग यू कैन से. दिस इज योर ओव्यूल कवरिंग. ये हो गया. एंड फाइनली दिस बिकम्स योर एम्ब्रियो सैक व्हिच इज योर फीमेल गैमेटोफाइट, है ना. ये हो जाएगा. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओव्यूल, इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स ऑफ ओव्यूल. ऑलराइट, अगर हम अगेन मॉडल को, if you can just isolate this part, see we can just isolate this one. See, this becomes your, you can see this becomes your hilum 1. All right, then again we can like slice out. If we just slice out this part, so you can see I have sliced out the nucellus part and the embryo sac part, so you can see only the covering. आपको सिर्फ कवरिंग दिखेगा ऐसे. अंदर की तरफ देखोगे so this is a kind of a void like structure. ऐसा है. ठीक है, ये पार्ट हो गया. Then again we can just go back like this. And of course this becomes your, this highlighted portion, this isolated portion which you can see, this becomes your integument portion, है ना. ये जो circle like structure है, this becomes your integument. All right, so this is about the structure of the ovule. Now we can move ahead with the gynoecium part. So basically gynoecium is your female reproductive part that usually that may consist of one pistil, so it will be called as monocarpellary, or it may consist of more than one pistil, तो ये multicarpellary हो जाएगा, है ना. और gynoecium को usually या pistil को हम usually बोलते हैं megasporophyll. So sometimes in your examination it is also asked this synonym. जैसे एंड्रोइशियम को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, उसी तरीके से गाइनोइशियम को या पिस्टिल को हम मेगास्पोरोफिल बोलेंगे. रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट,
So multicarpellary condition में अगर हुआ तो pistils can be in two forms. It can be either fused, it can be either free. Syncarpus is there. Fused को हम syncarpus condition बोलते हैं and free को हम apocarpus condition बोलेंगे. Example includes Papua and Michaelia. All right. Now, again, we can just move ahead. So now ovary कंसिस्ट ऑफ, अब हम अगर हम देखेंगे तो ओवरी का लोकलाइजेशन कैसे हो जाएगा या क्या सीक्वेंस हो जाता है. तो ओवरी जो होता है ना, ओवरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कैविटी जिसको हम लॉक्यूल बोलेंगे या ओवेरियन कैविटी बोलते हैं. एंड दिस लॉक्यूल और ओवेरियन कैविटी अल्टीमेटली फॉर्म्स योर प्लासेंटा. दिस इज गोइंग टू फॉर्म योर प्लासेंटा. ऑलराइट. एंड ये जो प्लासेंटा होता है वो अल्टीमेटली this is going to give rise to your ovule. So how the sequence goes on? So ovary हो गया, ovary से आपका ovarian cavity हो जाता है, ovarian cavity से placenta बनेगा, and placenta is ultimately going to give rise to your megasporangia जिसको हम बोलेंगे ovule. अब कुछ plants में ovules can be either one or it can be either many, and the examples are given over here. All right, ये हो जाएगा. And ovule ultimately is going to bear your embryo sac. We know this part. है ना? So this is the sequence that you need to remember it. This is very very important also. ठीक है, ये हो जाएगा. स्ट्रक्चर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था. फनिकल क्या है, हाइलम क्या है, इंटेग्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग, माइक्रोपाइल क्या है, जिसके थ्रू जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट था, एंड देयर इज यूजुअली योर एंट्री पॉइंट ऑफ पोलन ट्यूब. तो ये सारी चीजें भी आप ऑलरेडी डिस्कस्ड है. Then there is एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है. Then there is your chalaja, nucellus, है ना? Chalaja हो गया, nucellus, nutritive tissue है, abundant food reserve की तरह, and there is your embryo sac, which is your basically your female gametophyte. And as I already told you कि ovule जो होगा वो usually आपका integumented megasporangium को represent करता है. So this is the important thing to be noted. यहाँ पे मैंने एक diagrammatic section भी बनाया है so that the things can be clear in your mind. That is the case. Okay, now moving ahead. So this was about the structure of ovule. हाँ, अब हम बात करेंगे now जिस तरीके से हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था उसी तरीके से हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. All right, which is also again very very important. सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बना था, तो उसी तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस में हमारा क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा, है ना. ना दिस मेगास्पोर मदर सेल इट इज ऑफ डिप्लॉयड ओरिजिन. ये ऑलरेडी डिप्लॉयड रहता है. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर. यहाँ पे मैं एक डायग्रामेटिक सेक्शन बनाऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. कंसिडरिंग दिस एज आवर मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, और ये हमारा क्या है, डिप्लॉयड है. इसमें मियोसिस होगा. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये मेगास्पोर मदर सेल कहां से आया. सो मेगास्पोर मदर सेल यूजुअली इज फाउंड, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ के जो कुछ सेल्स होते हैं ना, ये जो आपको ये पूरा न्यूसीलस दिख रहा है, न्यूसीलर के जो सेल्स होते हैं ना वही अल्टीमेटली मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट करते हैं. तो इसमें जब ये मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, है ना, न्यूसीलर के सेल्स, तो इसमें होगा क्या, मियोसिस. और जब इसमें मियोसिस होगा तो ये अल्टीमेटली मियोसिस फॉलोड बाय वन माइटोसिस. जस्ट लाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस बिल्कुल सेम है. ऑलराइट, तो इसमें आपके 4 मेगास्पोर्स बनेंगे. ठीक है, अब जब 4 मेगास्पोर्स बनते, उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, लेकिन यहाँ पे हमें 4 मेगास्पोर बनते हैं, वो टेट्राड के फॉर्म में नहीं रहते, वो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं ऐसे. दीज आर ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स. अब जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये कि यहाँ पे आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स 3 मेगास्पोर्स आर गोइंग टू डीजेनरेट. ठीक है, सो out of 4 megaspores, all right, 3 is going to degenerate. Clear? And only 1 remains functional.
एक ही मेगास्पोर होगा जो कि फंक्शनल रहेगा, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा ना, वही अल्टीमेटली आपका बनाएगा क्या, एम्ब्रियो सैक. वन फंक्शनल मेगास्पोर अदर में, and this is only ultimately going to give rise to your embryo sac, which is considered to be as a female gametophyte. तो ये डिफरेंस हो जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में चारों माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो रहे थे, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज योर मेगास्पोरोजेनेसिस. सो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, ओनली वन ऑफ योर मेगास्पोर इज functional, and that is ultimately going to give rise to your what, embryo sac, which is a female gametophyte. और क्योंकि एक मेगास्पोर से embryo sac बनता है, that's why this development is considered to be as your monosporic development. इसीलिए हम इसको monosporic development बोलते हैं, क्योंकि एक स्पोर से पूरा का पूरा embryo sac हमारा बनता है. Mono means single and sporic means spore. That's why monosporic development. So this is your process of megasporogenesis. ठीक है, तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल आता है ना, ये न्यूसीलर सेल से ही आता है, वहां से फिर अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करके हमारा ये, इसीलिए हमारा ये न्यूसीलस के अंदर में होता है एम्ब्रियो सैक. यू कैन सी कि ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूसीलस के अंदर में है, इसीलिए. ठीक है, सो दैट इज द केस. We can just go back to our this slide. तो वही सारे प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किए हुए हैं. ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, वो हम लोग थोड़ा सा एम्ब्रियो सैक के भी बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वाई एम्ब्रियो सैक इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एम्ब्रियो सैक इज बेसिकली, let me just show you the model. So you can see this is again, this is the longitudinal section of your embryo sac, है ना, ये हमें दिख रहा है, and you can see various cells present over here. तो हम लोग इसके बारे में आप देख लेते हैं. तो embryo sac जो है, this embryo sac represents your female gametophyte. ये embryo sac का main function ये होता है ना, that this is responsible for double fertilization. ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे फर्टिलाइजेशन होना है, जहां पे ओव्यूल जो होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो जो, एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में ये मैं आपको बता दूं कि वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल इन द कमिंग लेसन्स एंड यू नो लेसन्स ऑफ दिस चैप्टर एज वेल. तो इसके बारे में हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना जानना है कि इट इज द साइट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज एक्चुअली लोकेशन याद में रखना है कि कहाँ है. ठीक है, बना कैसे वो भी ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो वो चीज हो जाएगा. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द सेल्स ऑफ योर एम्ब्रियो सैक. सो कोई भी टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है ना, वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट होता है. रिमेंबर दिस, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट. अब कैसे 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट हुआ, हम ये देखेंगे. ऑलराइट, ये जो एंड हो जाएगा हमारा, ये हमारा चालजा का एंड होता है, और ये वाला जो एंड हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा माइक्रोपाइल का एंड. क्लियर? नाउ दीज 3 सेल्स which is present in the chalazal pole, ये एंटीपोडल सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये एंटीपोडल सेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? which are 3 in number. आप देख सकते हैं ये 3 है, 1, 2 and 3. All right, this becomes your polar nuclei. ये हो जाएगा, तो ये basically 2 है. This is your egg cell, which is 1 number, and these 2 are your synergids. ठीक है, ये synergids हो जाएगा, which are 2 in number. You can see that synergids have the presence of filiform apparatus over here.
यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। तो ये हो गया हमारा इसका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। ऑलराइट, नाउ यू कैन अगेन सी कि अब हमारा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट हुआ कैसे। देखो, we can just like this is 1, this is 2, this is 3. All right, this is present in one cell, so this becomes your 4, this becomes your 5, 6, 7. तो ये हो गया हमारा 7 cells. What about the nucleus one? तो न्यूक्लियस को अगर हम फिर से देखेंगे तो उसके लिए अगेन हम लेबल कर सकते हैं। तो ये आपका 1 हो गया, एक न्यूक्लियस, दूसरा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ न्यूक्लियस, सेवेंथ न्यूक्लियस एंड 8th nucleus. So that's why it is 7 cell and 8 nucleus. So this is the structure of your embryo sac, है ना। अब इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे एग apparatus. Egg apparatus. So egg apparatus is a combination of these two structures. ये हमारा egg apparatus में आता है. That means egg cell and synergid. Filiform apparatus का क्या फंक्शन है? Filiform apparatus आप देख सकते हो कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह है। इसका मेन फंक्शन होता है ना कि ये गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. So it basically guides the entry of pollen tube. So that pollen tube की एंट्री बहुत ही इजी हो और वो अपना मेल गैमेट्स यहाँ पर आके रिलीज करे. Alright, so this is all about the structure of your embryo sac. Now, again we can move on to the explanatory part of this. Alright, so you can see over here कि यहाँ पे मैंने अलग अलग stages बताए हुए हैं of the development of the female gametophyte of the embryo sac, है ना. तो यहाँ पे ये एक single functional megaspore से शुरू होते हुए there is a 2 cell stage, then there is a 4 cell stage, then there is a 8 cell stage and ultimately 8 cell stage के बाद ये पूरा rearrangement होता है और ये पूरा structure हमारा बनाता है. ठीक है ना. इसमें 2 divisions होंगे और किसी भी embryo sac के formation में there are basically 2 divisions. All right, one is called as the free nuclear division and the other is called as the cellular division. तो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर आपका बनता है ना, ये 2 डिविजन्स के थ्रू बन रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स एंड सेल्युलर डिविजन्स, इसके थ्रू होता है. तो पूरा का पूरा अल्टीमेटली हमारा रीअरेंजमेंट हो जाएगा सेल्स का एंड द एंटायर गैमेटोफाइट, दैट मींस द एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ योर फ्रॉम द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर. ऑलराइट, सो दिस इज द केस. Now, again, okay, so this was all about your entire male and female reproductive system जिसमें हमने सारा process देखा. Microsporangium, then there is your Megasporogenesis, then there is your Microsporogenesis, Megasporogenesis. So comparative analysis हम लोगों ने सारी चीजों की है. We have seen the model as well, है ना. अलग अलग स्ट्रक्चर्स एंड सारी चीजें हम लोगों ने देखी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द क्वेश्चंस पार्ट नाउ. वी कैन जस्ट मूव अहेड. सो लेट अस डील विद द क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स नीट में पूछा गया है ना. Now the first question says that Megasporangium is equivalent to, and this has been asked in your NEET 2003 examination. So this is a very easy question you can say, और explanatory part भी है क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने just अभी पढ़ा कि Megasporangium जो होता है that is equivalent to your ovule undoubtedly. All right, now the next question says that which one of the following statement is correct. All right, अब हमें correct statement इसमें identify करना है. Now endothecium produces the microspores. All right, so this is wrong because endothecium जो second layer होता है इसका main काम होता है क्या, प्रोटेक्शन का. तो ये माइक्रोस्पोर्स को तो वैसे ही प्रोड्यूस नहीं करेगा. सो दिस इज योर रॉन्ग. ठीक है. tapetum nourishes the developing pollen grain. Yes, this is a correct statement. All right. Hard outer layer of pollen is called intine. Wrong. This is also wrong क्योंकि जो hard layer होता है this is not called intine.
this is called as your exine, क्योंकि this is made of sporopollen. All right, and we have seen, and the last statement states that sporogenous tissue is haploid. So sporogenous tissue is not haploid. This is your diploid, है ना? So that's why this statement is also wrong. तो हमारा जो correct statement होता है वो जाएगा option B वाला. Clear? This is the case. Now, we can just move ahead with the next one. Now, the next question says that pollen जो tablets होते हैं, these are available in the market for. अब अभी हम लोगों ने ये पढ़ा भी देखा भी कि pollen tablets की availability क्यों होती है? Because they are a very good source of supplementing food. क्यों? क्योंकि they are rich in vitamin B12. Then they are also rich in minerals. And along with that, they are rich in amino acids. इसीलिए इसको foods के form में supplement किया गया है, that too in the form of tablets. All right, this is the case. तो इसमें हमारा जो option C है, this will be correct. Why not other options? Other options इसलिए नहीं होगा क्योंकि in vitro fertilization कहीं भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा. So this is not the case, and that too market में availability तो in vitro fertilization के लिए हो ही नहीं सकता. Then the second option says breeding programs. Yes, breeding programs के लिए होता है, but that is only available for scientific purpose, not available in the market for like buying or selling something. तो ये सिर्फ और सिर्फ scientific purpose के लिए होता है. ठीक है? It is scientific purposes. Clear? तो ये भी अभी valid नहीं है reason. And then XC2 conservation, no. Market में availability, it is not meant for XC2 conservation. Clear? So, sorry. The correct option will be your option C. Now, the next question says that what is the function of filiform apparatus? Just right now, अभी हम लोगों ने इस question से deal किया है that the function of filiform apparatus is to guide the entry of pollen tube. All right. Now, option A में अगर हम देखें तो it says that recognizes the suitable pollen at stigma. No. Stimulates the division of generative cell. No, not at all. ये तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये generative cell pollen grain का part होता है. तो ये कहाँ से female gametophyte का part हो जाएगा? Producing nectar? No. So the right option will be guiding the entry of pollen tube. All right. तो ये चीज हो जाएगा. Now, in case of your male gametophyte, if you're going to see, all right, the next question says that male gametophyte in angiosperms produces single sperm and 2 vegetative cells. तो क्या ये single sperm and 2 vegetative cell बनाता है? No, not at all. क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि vegetative cell तो एक ही होता है. There is only one vegetative cell. So this option is wrong. All right. 3 sperms produce करता है? No, it doesn't produce 3 sperms. All right. So that is the case. Then 2 sperms and a vegetative cell. Yes, ये हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये जो 2 sperms हैं, these 2 sperms are produced from the generative cell. So ये हमारा GC से produce होता है जो कि generative cell होता है और एक हमारा vegetative cell already रहता ही है. So this is the correct option. Single sperm and vegetative cell, again a big no. तो हमारा जो right means जो correct option होगा, that will be your option C. All right. So this is the case. Now again, the next question says that in angiosperms, the microsporogenesis and the megasporogenesis involves. All right. इस दोनों में क्या ऐसा common feature होता है जो कि include होगा? So this involves meiosis. Of course, बिल्कुल दोनों में ही हम लोगों ने देखा था meiosis. लेकिन let us just look into other options as well. क्या microsporogenesis and megasporogenesis ovule में होता है? No. Microsporogenesis occurs in your microsporangium, जो कि आपका anther होगा. ठीक है?
और जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है that takes place in your ovule, वो ओव्यूल में होता है. तो this is not the correct option. It occurs in anther? No. Again, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब कि एंथर में होगा, दूसरा ओव्यूल में होगा. That's so this is also wrong. It forms gametes without further division. Wrong. A big no. Divisions तो definitely involve होते हैं. हम लोगों ने देखा एक meiosis और एक mitosis. So the correct option will be the first option, involving meiosis. Now, the next question is that the proximal end of the filament of stamen is attached to. Now, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब मैंने ये ड्रॉ किया हुआ था कि हम लोगों ने एंथर लोब्स के साथ फिलामेंट को जब यहाँ पे ड्रॉ किया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दो एंड्स होते हैं, एक तो ये एंड होता है और एक ये एंड होता है. सो द एंड विच इज अटैच्ड टू योर एंथर लोब्स इज कॉल्ड एज योर डिस्टल एंड, and the filament end which is attached to your thalamus or petal, that is called as your proximal end. तो proximal end किससे attached हुआ? Proximal end हमारा attached होता है thalamus और petal से, undoubtedly. All right, so this thalamus or petal becomes your answer. Now the next question is that यहाँ पे बोला है कि the ovule of an angiosperm is technically equivalent to. All right, so this is technically equivalent to your megasporangium, megasporophyll, megaspore mother cell, and megaspore. So you should know that ovule of an angiosperm is technically equivalent to your megasporangium. तो ये हम लोगों ने देखा था. The next questions are that double fertilization is exhibited by. Now, अभी हम लोगों ने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन किसमें हो रहा है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियो सैक में. ये देखा. तो इफ द डबल फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग इन केस ऑफ योर एम्ब्रियो सैक, और हम लोग जो ये पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ रहे थे. दिस एंटायर प्रोसेस दैट वी हैव स्टडीड इट इन योर flowering plants, which is your angiosperms. So the correct option will be your angiosperms over here. All right, so this is the case. Not algae क्योंकि ये non-flowering है. Not fungi because this is also non-flowering, and not gymnosperm because this is also non-flowering plant. So that's why. Now, in majority of the angiosperms, egg has filiform apparatus. No, egg do not has filiform apparatus. It is the synergids which have filiform apparatus. इसमें हमारा क्या हो जाएगा? Synergids जिसमें filiform apparatus होता है. ये मैंने आपको अब स्ट्रक्चर दिखाया था, तो वो चीज है. Now there are numerous antipodal cells. Numerous antipodal cells कहने का मतलब कि 3 होता है, ठीक है? But let's look on to the other statement as well. The next statement says that reduction division, that means your meiotic division, occurs in the megaspore mother cell. So yes, definitely ये हमारा reduction division होता है. So this is your right. Now the option D says that a small central cell is present in that embryo sac. So central cell जो होता है वो small, पहली बात तो बिल्कुल भी नहीं होता. It is a big cell. So this statement is also wrong क्योंकि वो बीच में एकदम होता है. सो दिस इज नॉट अ स्मॉल सेल, दिस इज अ बिग सेल. ऑलराइट, तो हमारा जो थर्ड जो और एक ऑप्शन अभी हमारा बच रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल. ये भी स्टेटमेंट को हम रॉन्ग बोलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक डेफिनेट नंबर नहीं दिया है. अगर डेफिनेट नंबर दिया होता दैट देयर आर 3 एंटीपोडल सेल तो माइट बी पॉसिबल ये स्टेटमेंट करेक्ट होता. लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट नंबर नहीं दिया है, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है कि रिडक्शन डिवीजन अगर करता है मेगास्पोर मदर सेल में. सो यस, इट्स ट्रू. ऑलराइट, सो दिस इज द केस. सो दिस इज all about the questions that we have seen and about the topic as well.
All right. So we have discussed the entire male and female reproductive structure of the flower in detail and covered a lot of topics with a lot of questions and of your second chapter of your 12th standard. All right. So this is all for today, and thank you very much for joining with me.